Good morning, students. Today's topic of discussion is AC bridges. In today's topics, the topics covered will be introduction to AC bridges or impedance bridges. Then we will be discussing the sources which will be used for AC bridges, detectors used in AC bridges, general balance condition, measurement of inductance. The various bridges which we will be discussing will be Maxwell's bridge, Maxwell's Wien bridge, Anderson bridge, Hay bridge, Owens bridge. Then measurement of capacitance using De Sauty bridge and Shearing bridge. Now, first of all, what's an AC bridge? And first of all, what is a bridge? Now, when we want to measure an unknown impedance, then we make use of some known impedances and then balance the current flowing in a bridge. A bridge usually consists of 4 arms, and we find out the unknown resistance or unknown impedance in terms of known impedances. The best example of the bridge is the Wheatstone bridge. Although it is not an AC bridge, it is a DC bridge. Okay, so when we are talking about AC bridge, alternating current bridge methods, they are the most useful method for precise measurement of self and mutual inductance and capacitance. इनके साथ हम ना तो सिर्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, बल्कि टोटल इम्पिडेंस और लॉस एंगल भी मेजर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी गो फॉर मेजरमेंट यूजिंग AC bridges. AC bridge usually consists of 4 branches, a AC source and a balance detector. Now, this is a simple AC bridge. Its 4 branches are A, B, C, D, and between the branch AB we have an impedance Z1. It can be any combination. It can be the impedance can be a inductive impedance, capacitive impedance, or a pure resistive impedance. So we have 4 branches, namely AB, BC, AD and CD, and we have a detector between B and D, and we have a AC source between A and C. Now, when a balance condition is achieved, then the current flowing through the detector will be 0. जैसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर करते हैं वैसे ही हम इसमें करते हैं. So say this is our bridge. We have 4 impedances Z1, Z2, Z3 and Z4. Now let the current here be I. At the node A, the current is splitting into 2 parts, say I1 and I2. करंट I1 जो है वो Z1 में फ्लो कर रहा है और करंट I2 जो है वो Z3 में फ्लो कर रहा है. ऐसे ही B में आके उसका कुछ करंट I1 जो करंट था उसका कुछ हिस्सा ID फ्लो करेगा डिटेक्टर के अंदर और कुछ हमारा I3 फ्लो करेगा. So this is Z2, this is Z3 के अंदर, and similarly I4 will travel in Z4. Now what we do is we balance. This is the unknown impedance. जो भी आपकी unknown impedance है, that is connected in the branch first or branch AB. Now what we do is we vary. जिस टाइम पे आप वो impedance लगाएंगे तो इस डिटेक्टर की आर्म के अंदर जो हमने हेडफोन लगा रखा है, that we will discuss afterwards कि why we had connected headphone या क्या क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं. So we had connected a headphone. So the current flowing through this headphone will produce a sound. Humming sound आपको सुनेगा, and जब तक वो साउंड कम नहीं हो जाता we will vary Z2, Z4 और Z3. There will be some variable terms जिनको आप वेरी करेंगे, जिन इम्पिडेंस को वेरी करेंगे. Now what happens when the current flowing through this detector comes out to be 0, when the sound becomes 0, at that point we say that the bridge is balanced. Now if the bridge is balanced, what happens is, as in Wheatstone bridge में जैसे होता था वैसे ही the voltage drop between voltage potential at B must be equal to potential at D. Okay,
तभी हमारा करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, एक हायर पोटेंशियल से एक लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। अगर बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम है, if they are at equal potential, the current flowing, no current will flow from B to D. So we will balance this bridge, we will vary the impedances till the balance condition is achieved, and once the balance condition is achieved, then we will solve the equations for this particular bridge, and we will get the value of unknown impedance that we will see afterwards. Okay, so AC bridge consists of 4 branches, an AC source and a balance detector. Now coming out to source, AC source can be of two type. One is for measurement at power frequency, we can directly use the AC line source. अगर आप 50 हर्ट्ज के ऊपर मेजर करना चाहते हो तो 50 हर्ट्ज डायरेक्टली हम सप्लाई ले सकते हैं, क्योंकि AC में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है फ्रीक्वेंसी भी। आप अल्टरनेटिंग सिग्नल अगर आप ले रहे हो वो किस फ्रीक्वेंसी का है, अगर वो लाइन फ्रीक्वेंसी का ही है, पावर फ्रीक्वेंसी का ही है, तो डायरेक्टली जो पावर आपको मिल रही है उस पावर को ही स्टेप डाउन करके आप ब्रिज में ले लो, ट्रांसफार्मर लगा लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और उसके आगे आप वोल्टेज कम हो जाएगी, वो डायरेक्टली आप ब्रिज में लगा सकते हो। लेकिन अगर आप इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं काम कर रहे, इफ़ यू आर वर्किंग एट सम अदर फ्रीक्वेंसी, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन बट मेक यूज ऑफ alternating circuits, amplifiers and oscillators. So for measurement at audio frequency, electronic oscillators and amplifiers are used as AC source. Now दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज है। अगर आप अपनी जो इम्पिडेंस यूज़ कर रहे हो वो आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हो या जिस हिसाब से आप यूज़ कर रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी आपने चूज़ करनी है उसके हिसाब से हमारे पास दो सोर्स हो जाते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग एट power frequency or line frequency is 50 hertz, no need of getting a electronic oscillator or AC source or amplifier. We can directly connect it from the main source, main जो power है उसी को directly लगा देंगे। लेकिन अगर हम दूसरी frequency पे काम कर रहे हैं, we are not working at 50 hertz, we are working at say 2 kilohertz. Now for 2 kilohertz what we will require an oscillator which will generate a signal of 2 kilohertz, then we will require its signal strength to be increased. So for that purpose we will require an amplifier. So we have two types of sources. Similarly we have detectors. Now if you remember a Wheatstone bridge which was used for measurement of impedances, resistances, उसके अंदर हम galvanometer यूज़ किया करते थे। galvanometer 0 पे रहता था, और अगर आपका करंट इज मूविंग फ्रॉम बी टू डी से करंट इज मूविंग डाउनवर्ड, वो उसकी जो डिफ्लेक्शन होती थी वो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड्स दिखा देता था, और करंट अगर ऊपर जा रहा है वो डिफ्लेक्शन अपवर्ड दिखा देता था। और हम उसको तब तक बैलेंस करते थे जब तक वो सेंटर में नहीं आ जाता। अगर इधर जा रहा है करंट इज नेगेटिव, इधर जा रहा है करंट इज पॉजिटिव, तो जब तक करंट जीरो नहीं आ जाता तब तक हम इम्पिडेंस को वेरी करते थे। सो लेकिन गैल्वेनोमीटर cannot be used for AC measurement. Why we can't use that detector? Because AC के अंदर क्या है, with every half cycle हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होती रहेगी। एक बार आपकी वोल्टेज पॉजिटिव होगी, एक बार नेगेटिव होगी, एक बार करंट का पॉजिटिव हाफ आएगा, एक बार करंट का नेगेटिव हाफ आएगा। तो जो आपका नॉर्मल, अगर आप गैल्वेनोमीटर की बात करें हम, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करता रहेगा, हमें ये नहीं पता लगेगा, वो अपनी पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करता रहेगा। We will not be able to get the correct value whether a balance has been achieved or not. So for that purpose what we do is we make use of either headphones or telephone receiver, or we make use of vibratory galvanometer. So we commonly use detectors are telephone receivers. If the frequency is between 250 Hz to 5 kHz, we go for telephone receivers और वी गो फॉर हेडफोन्स। दोनों का एक ही काम है, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है दैट साउंड इज यूज्ड, वो उस साउंड को जब जितना करंट कम होगा उतना साउंड कम होगा, तो जब तक साउंड ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक हम उसको बैलेंस करते हैं। साउंड ज़ीरो होने का मतलब है करंट फ्लोइंग थ्रू द हेडफोन और करंट फ्लोइंग थ्रू द टेलीफोन रिसीवर इज ज़ीरो। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर।
vibration galvanometer is used for frequencies below 200 hertz. Below 200 hertz means nearly low frequencies हैं, तो डीसी के पास की फ्रीक्वेंसीज हैं ये 200 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसीज जहाँ हैं वहाँ हम वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. So now coming out to the we had now discussed the source and this. So this is your AC bridge. Z1, Z2, Z3, Z4 are the four impedances. We have a source and a detector. Source can be your directly power source, or it can be a amplifier and a combination of a oscillator and an amplifier. Detector can be a headphone or telephone receiver or vibratory galvanometer. Now in this particular case, when the points B and D they are at same potential, the voltage drop between AB and AD will be equal. Now if we come here, the current flowing through this detector will be 0 when the potential of B will be equal to potential of D. Now if the potential of B is same as that of potential at D, then voltage across AD will be same as that of AB. Okay, because B का भी वही potential है जो D का potential है. इसमें voltage drop क्या होगा? Potential at B minus potential at A. और यहाँ पे क्या होगा? Potential at D minus potential at A. तो क्योंकि ये दोनों सेम है तो क्या होगा हमारे पास voltage drop across Z1 is equal to voltage drop across Z2. If the current flowing is I1, then I1 Z1 will be equal to I2 Z2. Now similarly, potential at B is same as potential at D, जो जिससे हम start हुए. So potential across the voltage drop across Z3 will be equal to voltage drop across Z4. Okay, so we will have I3 Z3 is equal to I4 into Z4. Say this is equation number 1, this is equation number 2. Now if we apply KCL at node B, either at node B or at node D, what we have is incoming current is I1, outgoing currents are I3 and ID. Now under the balance condition, balance हमारे पास कब आएगा? जब डिटेक्टर में से करंट नहीं फ्लो कर रहा, या जब ID is equal to 0 और I1 is equal to I3. Okay. Similarly, if we apply KCL at node, this incoming current is I2 plus ID is equal to I4. अगर हम यहाँ पे KCL लगाते हैं, KCL at D. Now because ID is 0 under balance condition, I2 is equal to I4. If we substitute this value in this equation, in equation number 2, what we get is I1 into Z3 is equal to I2 into Z4. This is equation number 3. If we divide equation number 1 by equation number 3, what we get is so we have I1 in both numerator and denominator, and here we have I2 in both numerator and denominator. It will cancel. Or what we have is Z1 over Z3 is equal to Z2 over Z4, or
Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. This is our standard balance condition, that product of impedance of opposite arms are equal. Z1 Z4, product of Z1 Z4 is equal to product of Z2 Z3. Okay, so this is the standard balance condition or general balance condition for any particular bridge. जितने ब्रिज हम आज पढ़ेंगे उनके अंदर सबके अंदर जो कंडीशन यूज होगी वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इम्पिडेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल एक्सेप्ट एंडरसन ब्रिज. एंडरसन ब्रिज में एक मॉडिफिकेशन होती है, दैट वी विल डिस्कस जब हम एंडरसन ब्रिज पढ़ेंगे. नहीं तो बाकी सारे ब्रिजेस में हमारी जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि प्रोडक्ट ऑफ इम्पिडेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स आर इक्वल. So we have this. So Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. Now measurement of inductance. Now we will discuss the various bridges. Measurement of inductance. We have 5 main bridges for measurement of inductance. First of all, we have Maxwell's bridge. And then we have modification of Maxwell's bridge as Maxwell's Wien bridge. Then we have Anderson bridge, we have Hay bridge, and we have Owens bridge. Now we will discuss one by one. First of all, Maxwell's bridge. Now in the Maxwell's bridge, this is the impedances or now, so we have Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. Now इसमें क्या है हमारे पास, this one is unknown impedance. Z1 is the unknown impedance जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है. तो इस ब्रिज के अंदर, मैक्सवेल्स ब्रिज के अंदर हम यूज करते हैं 3 रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर और इंडक्टर हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन इम्पिडेंस. ओके, सो नाउ हमारे पास क्या है, Z1 Z4 is equal to Z2 Z3, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म इम्पिडेंस. तो हमारे पास जब सीरीज में हमारे पास RL सर्किट हो तो उसकी इम्पिडेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो होगी R, या Z1 की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस J ओमेगा L1. ओके, क्योंकि सीरीज में है इसलिए हमारा नॉर्मल ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंडक्टर का क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंस होती है. सो व्हाट वी हैव इज Z1 इज R1 प्लस J ओमेगा L1, Z2 इज R2, Z3 is R3 plus J omega L3, and Z4 is R4. So if we substitute the values in this equation, in the standard equation, that Z1 Z4 is equal to Z2 Z3, what we will get is R1 plus J omega L1 into R4 is equal to R2 into R3